Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. In this video lecture, we will learn about how to draw shear force diagram and bending moment diagram for cantilever beam. Okay, let us start with the example. Now, the example is asked in May 2010 for 7 marks in Savitribai Phule Pune University. Now example is draw SFD and BMD for cantilever beam as shown in figure. Now the beam is given like this. Okay. Now this is the cantilever beam. Okay. At A there is 3 kilonewton downward force. At E 2.5 kilonewton downward force, and from C to D 1 kilonewton per meter load is given for 2 meter length. Okay. Now first of all we need to find out the reaction. For that purpose, step 1 will be to find out the reaction, that is the RA. Now in this case, first we need to apply the conditions of equilibrium. As we know, first condition is summation of f of y is equal to 0. That is the algebraic sum of all the vertical, that is all the unbalanced vertical forces is equal to 0. Here we consider upward vertical force is positive and downward negative. Okay, downward force is negative. Now here observe this diagram. If I redraw this diagram like this, what will happen due to the cantilever beam? Now here vertical reaction will apply, okay, for supporting this type of the loads. Okay, so how much load it can carry? If I consider RA as the reaction at A, then RA will act as a vertical upward force, that is the RA, that is the positive RA, minus 3, okay, minus 1 into 2 minus 2.5, you can see here, and which is equal to 0. Now with the help of these calculations, find out RA as 7.5 kilonewton, which is positive. That means it will act vertically upward at A. Okay, again due to these forces, now the end A is fixed. Okay, so at A movement will generate due to these vertical loads. Okay, so we need to calculate that movement also. Okay, यहाँ पे A की जगह पे फिक्स होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट जनरेट हो जाएगी फिक्स मूवमेंट की, फिक्स्ड सपोर्ट की वजह से, इन लोड की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्टिकली, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगी, उसकी वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है. तो हमने क्या किया, सपोर्टिंग क्लॉकवाइज है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको रिएक्शन के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट जनरेट होगी, तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कंसिडर किया. सो वी कंसिडर मूवमेंट एट ए. अब ये m की वैल्यू यहाँ पे हमने m कंसिडर किया, तो इस m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, मोमेंट एट a, दैट इज द समेशन ऑफ मोमेंट एट a, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट a इज इक्वल टू 0. सो माइनस m, व्हाई माइनस m, बिकॉज दिस माइनस m विल एक्ट एज अ नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो माइनस m because we have considered this consideration anti-clockwise moment negative, clockwise moment positive. Now in this case minus m, okay, at A 3 kilonewton will act clockwise, that is 3 into 1. It will again act 1 into 2, okay, 1 into 2, this is the load, equivalent load, and which is concentrated at the center of CD, that is at 1 meter, okay, plus this and plus this distance, that is the 2 by 2 plus 2.5. Now here this distance is 2.5, okay, plus 2.5 into the total distance is 5, okay, into 5 is equal to 0. Now with the help of this you can calculate the value of m, okay, and which is minus m is equal to m is equal to minus 22.5. Yeah, here m is equal to minus 22.5 kilonewton meter, and it will act anti-clockwise at A. Okay, so that we can see here m is act anti-clockwise, that is minus 22.5. Okay, now next step is how to calculate the shear force values.
For that purpose, we need to consider the sections at the left and right side of the point, particular A, B, C, D, etc. Now here in red lines, you can consider here the SF at A, SF shear force just at left side of point A. Okay, now here there is no load, that means shear force at left side of the point A is 0. Again, if I consider the sections just at right side of the point A, that means here one vertical load will act. Now consider here moment will not consider in shear force diagram calculation करते वक्त moment consider नहीं करते, याद रखिए सिर्फ वर्टिकल फोर्स कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे सेक्शन अगर कंसिडर किया तो सेक्शन में लेफ्ट साइड में और सेक्शन के राइट साइड में अगर पॉजिटिव वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स रहेगा तो पॉजिटिव शेयर फोर्स हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये कंसिडरेशन से. ठीक है, अगर डाउनवर्ड फोर्स रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इस साइड में अपवर्ड रहेगा तो नेगेटिव. ओके, नाउ दिस इज द सेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अभी सेक्शन के लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू प्लस 7.5 किलो न्यूटन है, तो वहाँ पे प्लस 7.5 किलो न्यूटन आएगा. ओके, सिमिलरली शेयर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बी के लेफ्ट में कंसिडर किया तो वहाँ तो कोई लोड नहीं है, तो सिर्फ 7.5 किलो न्यूटन की एक लाइन यहाँ पे ऐसे आ जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट शेयर फोर्स जस्ट एट राइट साइड ऑफ द पॉइंट बी. अब यहाँ पे एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स भी है और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स भी है, तो यहाँ पे क्या होगा 7.5 माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस समथिंग कितना आएगा, प्लस 7.5 माइनस 3 कितना होगा उसका कैलकुलेशंस 4.5 किलो न्यूटन. तो यहाँ पे क्या होगा 4.5 किलो न्यूटन का लोड आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेंगे तो वहाँ तो कोई लोड नहीं है तो 4.5 आएगा. राइट हैंड साइड में भी कोई लोड नहीं है तो वही उतना ही आएगा. अब यहाँ पे लेफ्ट में लेंगे तो प्लस 2.5 आता है तो 2.5 यहाँ तक. अब यहाँ पे UDL है इसलिए क्या होगा इंक्लाइन लाइन आएगा. ओके, नेक्स्ट शेयर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड पॉइंट भी, तो वहाँ पे सिर्फ 2.5 किलो न्यूटन नहीं आता है तो वहाँ तक स्ट्रेट रहेगा. और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स 2.5 है तो उसी की वजह से और वो लास्ट में क्या होगा 0 होगा. ओके, सो यू कैन सी द शेयर फोर्स कैलकुलेशंस लाइक दिस. SF at A, left side of the point A 0, right side say plus 7.5, left 7.5, right of B 4.5, left of C. At C, shear force at C it becomes plus 4.5, shear force at D it becomes plus 2.5, shear force at left of point E plus 2.5 and right of point E it becomes 0. So in this way we can directly draw the shear force diagram. Okay, now with the help of these calculations draw the shear force diagram. Now here at left side of the point A is 0, so first draw the baseline. Okay, then here vertically upward force is 7.5, then you can see 7.5. Now between A and B there is no load, we can directly draw the straight line. There is vertical downward force at B3, that is 7.5 minus 3, it becomes 4.5. Again between B and C there is no load, that is it is straight line. Again C to D UDL 1 into 2, that is minus 1 into 2 4.5 minus 1 into 2, that is a 2.5. Okay, we can draw the inclined line for UDL. And then D to D there is no load, okay, to the left side of the point E, that is 2.5. And again if I consider the right hand side of the point E, that is it becomes downward, that means it is again 0. Okay, now here we can mark the positive sign above the baseline, so total shear force nature is positive. Okay, now here you can draw the shear force diagram like this by using the shear force values. Got it? Now next is bending moment values or bending moment calculations. Okay, now for that purpose we need to consider, okay, for that purpose first of all how to calculate the bending moment values. At first of all we need to calculate the bending moment at A. Now here we can consider only this moment. Now here in bending moment calculations we consider the moment, okay, whereas in shear force we cannot consider the moment or couple. Okay, so remember this thing. Now at A there is
anti-clockwise moment at A. Okay, so minus 22.5 kilonewton meter is that moment, so it will act anti-clockwise. Now for bending moment calculations, we consider anti-clockwise moment to the left and clockwise moment at the right hand side is negative. Okay, by using this consideration, anti-clockwise moment is negative, that means bending moment at A becomes minus 22.5 kilonewton. Here you can see bending moment at A minus 22.5 kilonewton meter. Again consider the bending moment at B. Now in this case minus 22.5 and plus 7.5 into 1. Okay, got it? Now in this way we can calculate the values minus 22.5 plus 7.5 into 1. Okay, again at C minus 22.5 plus 7.5 into 2.5 minus 3 into 1.5. Okay, and in this way you can calculate at D minus 22.5 plus 7.5 into 4.5. Okay, minus 3 into 3.5 and minus 1 into 2 by 2. Okay, that is 1. Okay, in this way you can calculate the moment at D. Again lastly moment at E minus 22.5 plus 7.5 into this distance, that is the 5, 3 into again this distance. Okay, how much it is? 4 minus 1 into 2 into 2 by 2. Okay, plus 0.5, that is the 1 into 2 into bracket 1 plus 0.5. Okay, now it becomes 0. Okay, in this way you can see here the bending moment calculations. At the end it becomes 0. Okay, so with the help of these calculations you can draw. Now here baseline, first bending moment at A minus 22.5 minus 22 minus values, draw, put below the baseline, that is mark here, and then you can see you can draw the straight line vertically downward. Okay, at B minus 15, again mark the value and just draw the inclined line because there is only vertical load. And again minus 8.5, again mark this minus 8.5. Now between C to D there is UDL, so you have to draw the parabolic curve. And again D to E there is no load, Okay, so again it becomes straight line. Okay, here mark the negative sign and here write down the BMD in kilonewton meter. Remember these things. Okay, mention the unit in every problem so that you can get the full marks. Okay, so in this way we can draw the shear force diagram and bending moment diagram for the cantilever in the problem. Okay, now here next one more problem we can see like this. Now this example is asked in December 2010 for 7 marks. For cantilever carrying load whose intensity varies from 0 at the free end to W per unit run at the fixed end, find out bending moment and shear force value at ends. Also draw shear force and bending moment diagram. Now this example is asked for 7 marks. यहाँ पे ये एग्जाम्पल 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है. कैंटिलीवर बीम है जिसकी इंटेंसिटी 0 है एट द फ्री एंड, यहाँ पे 0 है फ्री एंड के लिए, एंड टू W पर यूनिट रन. अब ये एग्जाम्पल सिर्फ इतना ही दिया है पेपर्स के अंदर, तो आपको ये वैल्यूज़ को देखते हुए उसको ड्रॉ करना है. ठीक है, फ्री एंड पे 0 है, W पर यूनिट रन एट द फिक्स्ड एंड. फिक्स एंड कहाँ पे है? इस तरह पे, यहाँ पे एक एंड पे W पर यूनिट रन है. फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट
एंड शेयर फोर्स, यहाँ पे शेयर फोर्स वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज पूछा गया है और SFD BMD ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, okay. At the one end there is free and other end W, okay. Now load is given like UVL, okay. Now here we can say RA, consider RA as the reaction at A, and with the help and due to this downward force at fixed end there will be one moment will generate M and which we consider negative, okay. यहाँ पे आपको negative या anti clockwise consider करनी है. Got it? Now first step is to find out the reaction. As we know reaction कैसे होती है. अब यहाँ पे triangular load है, अगर particular beam के ऊपर triangular load दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये W है, ये total length L है, तो इसका total load किस तरह से निकालते हैं, area of that particular loading diagram. अब ये triangular figure है तो इसका area क्या निकलता है, 1/2 base into height, 1/2 base into height, okay. Rewrite it like WL by 2, ठीक है. तो टोटल WL by 2 कहाँ कौन कैरी करेगा, RA कैरी करेगा. सो दैट by using the conditions of equilibrium, okay, we consider summation of f of y is equal to 0 plus RA minus WL by 2. Now here this is the area and we can, which will carry RA WL by 2, which is positive, that is the vertically upward, okay. Next, moment at A is 0. If we consider the moment at A, we need to calculate the moment at A. So moment at A is equal to 0. In this case we consider negative, that is the anti-clockwise moment, okay. Now in this case minus M, okay, and this we, and at A 1/2 W into L, okay, and which will act at L by 3 from point A, that is into L by 3, okay, and it becomes 0. So M becomes, we can say, minus, when we calculate these things, minus WL by L square by 6, okay. Now in this way you can see the calculations here, okay. Got it? Now next is shear force calculations. How to calculate the shear force values? It becomes very simple again. In this case, first of all we need to consider the section at XX, okay, having distance x from free end B. अब यहाँ पे क्या करना है, एक सेक्शन कंसिडर करना है XX और उसका डिस्टेंस x कंसिडर करना है B से. तो जब यहाँ पे और यहाँ पे इंटेंसिटी हम क्या कंसिडर करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर WX, तो यहाँ पे WX x के लिए है और टोटल WL के लिए है. तो WX की इंटेंसिटी क्या होगी, कैपिटल WX बाय L, ठीक है. तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी, WX बाय L. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ, अब यहाँ पे एट x लोडिंग वैल्यू इज WX बाय L. गॉट इट? नाउ ये WX बाय L हम टोटल लोड कंसिडर करेंगे एट x फ्रॉम B, ओके. तो एट x शेयर फोर्स एट एक्सेस इज इक्वल टू हाउ मच, जितना ये लोड होगा वर्टिकली डाउनवर्ड WX बाय L, ठीक है, उतना ही लोड क्या करेंगे हम, जैसे कि शेयर फोर्स एट x किया तो WX इंटू x डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल लोड, इसकी जो डायग्राम है ट्रायंगुलर है, उसका जितना लोड होगा, ठीक है, वो एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल होगा, WX इंटू x. अभी इस WX की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है WX बाय L, तो वो अगर हमने पुट की वहाँ पे तो कितना होगा, WX बाय L, अब यहाँ पे 2L करेंगे इंटू x, तो यहाँ पे क्या होगा, WX स्क्वायर बाय 2L होगा, ओके. तो शेयर फोर्स वैल्यू कितनी होगी एट x, WX स्क्वायर बाय 2L. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WX स्क्वायर बाय 2L की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये कैलकुलेशन से, इसको रेफर करें आप, ठीक है. नाउ दिस जनरल इक्वेशन फॉर शेयर फोर्स, ये क्या है, ये दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर शेयर फोर्स विच इज़ पैराबोलिक, और ये पैराबोलिक होगा,
ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू, अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की वैल्यू 0 दी, यानी शेयर फोर्स एट b 0 कंसिडर किया, तो शेयर फोर्स एट b बिकम 0 ही होगा। x की वैल्यू 0 कंसिडर की यहाँ पे, और इस इक्वेशन में पुटअप किया wx²/2l में, तो x इज इक्वल टू 0, इट बिकम्स 0। एट x इज इक्वल टू l होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा WL²/2l एंड इट बिकम्स प्लस WL/2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो फिर से क्या करें, बेस लाइन ड्रॉ करें, WL/2 RA की यहाँ पे आता है, और यहाँ पे पूरा लोड क्या होता है, B 0 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पैराबोलिक ड्रॉ किया, ठीक है, पैराबोलिक कर्व होता है। ओके, गॉट इट। लास्ट में अब यहाँ पे कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस भी सेम आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट एट x अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो यहाँ पे लोड कितना आता है, 1/2 WX इंटू एक्स। ओके, और ये कहाँ पे एक्ट होता है, इंटू x/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट कंसिडर की, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। तो इस केस में टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1/2 WX, ओके, इंटू x²/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, WX x³ / 6, ये इक्वेशन आएगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ओके। तो और वो क्या होगा, विच इज़ क्यूबिक होगा यहाँ पे इन केस में, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया, तो बेंडिंग मोमेंट एट b क्या होगा, 0 कंसिडर, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे x इज इक्वल टू l कंसिडर किया, तो यहाँ पे इक्वेशंस चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू -WX³ / 6l आएगा, और उसकी वैल्यू -WX³ / 6l आता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर x इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट एंड b, दैट इज 0, और l कंसिडर किया एट a, इट बिकम्स -WL² / 6, ठीक है। तो फिर से क्या करें, आप एक बेसलाइन ड्रॉ करें, -WL² / 6 a की जगह पे है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे मार्क करें, वहाँ पे लिखे WL² / 6, और यहाँ पे एंड पे तो 0 है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से आप क्यूबिक कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया पैराबोलिक, ठीक है, और ये हो गया क्यूबिक। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ बीम। Okay, so take down one exercise on it, assignment on it. Okay, now this example is asked in the examination for 7 marks in 2010. Okay, now the diagram is given like this. Okay, at fixed end the intensity is 0, and free end the intensity is 6 kN per meter run. Okay, and in this diagram draw shear force and bending moment diagram for a cantilever beam as shown in figure. You can say here this is the A, B, C, D and E. You can note down this thing. Okay, and find out the shear force value and bending moment values by using the simple calculations, and draw the SFD and BMD for the same. Okay, I hope you understood all the concepts regarding SFD and BMD and cantilever beam. Okay, if you have any query, ask me in the comment box. Okay, share this video to all the students, okay, who are learning in mechanical civil engineering, okay, because it is very helpful for this semester. Okay, so फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।